When speaking about efficient delivery systems, तो अक्सर Amazon, UPS, DHL का ख्याल आता है, लेकिन बहुत से लोग डब्बे वालों को भूल जाते हैं, even though these people do it each in their own efficient and non-digital way. ये लोग हर दिन लोगों का खाना टाइम पर उसकी जगह पहुंचा देते हैं, और ये एक ऐसी कंट्री में with narrow streets, outdated infrastructure and densely populated cities. Being fascinated by the way the Dabbawalas work, डायरेक्टर रितेश बात्रा इन्हीं लोगों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, but it ultimately turned out to be a romance called Lunchbox. Lunchbox tells the story of the young housewife Illa and the older Sajan who come into contact via letters through a wrongly delivered meal, and as a result, both lives completely change. Today, we're going to talk about the learnings in this movie. So without wasting any time further, let's start the learning journey. Humans like to plan because making and fulfilling a plan gives us the feeling कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है और हम बिल्कुल जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. Exactly like this, everything is going according to plan for Ila when she sends her daughter to school, when she gives lunch to the dabbawalas for her husband, या जब वो अपने बाकी के घर के काम निपटाती है. दूसरी तरफ सब कुछ साजन के प्लान के मुताबिक होता है जब वो सुबह सुबह काम पे जाता है, वक्त पे अपने खाने का वक्फा करता है और शाम को 5:30 बजे घर चला जाता है. Ela and Sajan's daily routine runs according to their plan and according to a scheme which gives them the feeling of security that they're doing something right in life, regardless of the fact whether this routine makes them happy or not. लेकिन फिर अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, तो फिर हमें मुश्किल महसूस होती है and that makes us feel insecure. हम नहीं जानते कि आगे क्या करना है और हम परेशान हो जाते हैं, or we start having imaginations about the unseen, possibly terrible future. लेकिन इस सब कुछ के बीच हम ये भूल जाते हैं that sometimes things happen for specific reasons and may bring opportunities with them, open up new perspectives or in the worst case want to protect us from dangers. और यही ईला के मामले में ही होता है. Although her life is going according to her plan, वो खुश नहीं है. कभी कभी सोचती है कि वो किसी के लिए जी रही है and she even struggles with suicidal thoughts. Things didn't seem to be going any better for Sajan either, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी जिंदगी उसके सामने से ही गुजर रही है. I spent my whole life standing in trains and buses. Now I'll have to stand even when I'm dead. You also get this feeling when you see his character alone. इन scenes में महसूस होता है कि वो अपने पास को अपने जहन में मुसलसल दोहराता है ताकि वो खुशी के लम्हे एक बार फिर से जी सके, such as the observation of his late wife during her watching TV. The arrival of the lunchbox on the wrong table was a happy coincidence for both of them, as it brought two lonely souls together जो प्यार की तलाश में थे, लेकिन उन्हें वो अपने आसपास नहीं मिल सका. लेकिन इनका रोमांस सिर्फ इसलिए हुआ because they were initially skeptical, but nevertheless openly encountered these unexpected incidents जो इनके लिए आखिर में जीने का एक नई वजह बनी. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि making plans is not wrong, लेकिन जिंदगी अपनी खूबसूरती खो देती है and loses its attraction if you try to plan life in advance. और कभी कभी ऐसी incidences हमें वो अनदेखे रास्ते दिखा देते हैं that better suit our desires than the path we are already going. Therefore, इंसान को अनदेखे रास्तों का खुलकर सामना करना चाहिए, obviously with a certain degree of caution, लेकिन जिंदगी पे कुछ हद तक भरोसा भी रखें. As Sheikh put it so precisely, कभी-कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है. लोग क्या कहेंगे, ये सवाल कितनों के ख्वाब तोड़ चुका है और आज भी लोगों को रोक देता है अपनी पसंद की चीजें करने से, सिर्फ दूसरों की राय की वजह से. In the movie there is a romance shown of two people who have so far been ignored by the society and its harsh opinions. The romance developed by a happy coincidence which leads to कि वो दोनों एक पहली मुलाकात का सोचते हैं, to give the romance a face. But before the meeting takes place, Sergeant smells the smell of an old man hanging to his body and discovers himself in this smell. वो ये फैसला कर लेता है कि वो इला के लिए बहुत बूढ़ा है and that No one buys yesterday's lottery ticket, Ila. यानी साजन खुद ही अपनी उम्र का सोच के ये फैसला कर लेता है कि उसकी उम्र के लोग दोबारा मोहब्बत नहीं कर सकते, especially not with a younger woman, and that the society only expects from them to wait for the dead. So he makes her wait hopelessly for him mentally and in writing says goodbye to the romance between two generations और नासिक की तरफ चल पड़ता है अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजारने के लिए. लेकिन ट्रेन में उसे एक बुजुर्ग मिलता है
जिसकी वजह से साजन इस सोच में पड़ जाता है कि वो खुद इतना भी बूढ़ा नहीं है टू लव अगेन, और दैट लव हैज नो एज. By then, Ila has already left for Bhutan, so Sajan decides first with the help of the Dabbawalas to search for her. बेशक फिल्म के आखिर में ये उम्मीद दी जाती है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये सोचने की बात है कि इस सिंपल से क्वेश्चन में लोग क्या कहेंगे कितनी ताकत है, which on the one hand can destroy a love जो काफी अरसे से चल रही थी, उसको एक लम्हे में तोड़ दिया. And on the other hand, does this thinking also not allow Sajan to acquire something of the positive attitude towards life from his friend Sheikh, जिसके पास कुछ भी नहीं था और जो एक सोसाइटी में पला बड़ा, which had probably only planned a life in slums for him. लेकिन फिर भी वो इस सोच से लड़ा in order to build a better life for himself, despite the opinions of others. यानी ये सिर्फ हमारे पे डिपेंड करता है कि हम दूसरों की सोच को इग्नोर करते हैं या नहीं, ताकि हम खुद एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें. Or just let the simple question decide on our future or destroy a happy present, as in the case of Sajan. जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो हमें नए इम्तिहान के आगे खड़ा कर देती है, so that we can grow beyond of ourselves. Some of these challenges or problems we can overcome on our own. With some others, we need help. लेकिन खुद इंसान को भी समझ आ जानी चाहिए कि हमें मदद की जरूरत है. Even though asking for help isn't always easy, क्योंकि इससे हमारी कमजोरी जाहिर होती है, जिससे हम अपने आप को सोसाइटी में एक्सपोज कर देते हैं कि हमें काम नहीं आता. In the film, Ila and her family can be used as an example to show how difficult it is for some people to overcome challenges or problems. Ila का मसला है that she hardly gets any attention from her husband. उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद, जैसे कि खाना बनाना. लंच कैसा लगा? Ila's mother also lives with a man she probably no longer loves, लेकिन फिर भी उसे उसका ख्याल रखना पड़ता है because of his illness. और इला का भाई भी अपनी जिंदगी के मसले सुलझा नहीं पाया और शायद इसलिए उसने अपनी जान ले ली. Both women have to struggle with challenges that they cannot cope with on their own, and yet both seem stubborn enough to not seek help. यहाँ तक कि वो एक दूसरे से अपने हालात के बारे में बात भी नहीं करना चाहते. This can be seen in the scene when Ila visits her mother with her daughter, और उसकी माँ इला की मदद ही नहीं लेना चाहती और ना ही अपने मसले बयां करना चाहती है, because she doesn't want to show her weakness in front of her daughter. Instead, she prefers to gradually sell her furniture and other belongings for her husband's medication. और यहाँ भी वो इला की मदद नहीं लेना चाहती, बल्कि सिर्फ अपने बेटे को याद करती है कि मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मुझे किसी से पैसे नहीं लेने पड़ते. लेकिन क्या हो सकता है जब हम मदद ना लें और ऐसे अपने ही रास्ते में खड़े रहें? It can happen that we develop the mindset that some problems cannot be solved and will remain a part of our lives until they may be solved on their own. जैसे कि इला की माँ का मसला हल हो जाता है जब उसका मियाँ मर जाता है और उसे ये एहसास होता है कि इतने अरसे से उसने अपने आप को देखा ही नहीं, और फिर उसे अपनी भूख महसूस होती है जो दूसरों की देखभाल में गायब हो गई थी. Perhaps she would have kept her joy of life if she had just sought help sooner. But it's also possible that we feel so pressed by the problems that we lose the patience to wait for it to disappear by its own, and we start developing suicidal thoughts. इला के भाई में जिंदगी से लड़ने की ताकत ही नहीं थी और उसे मरना ज्यादा आसान लगा, और ये ख्याल इला को भी आ चुके हैं, लेकिन साजन उसकी मदद करता है और ये ख्याल उसके दिल से हटा देता है. और साथ ही साजन इला को ये भी समझा देता है कि Things are never as bad as they seem. And little by little, with the indirect help of Sajan, Ila is able to leave her husband, and by that she overcomes her challenge. तो हमें ये देखने को मिलता है that we often only stand in our own way, और हमारे मसले मदद लेने से ज्यादा जल्दी हल हो सकते हैं. But the film also shows us that it's precisely this way of thinking which makes it difficult for the elderly in society, and that the topic is therefore taboo. हालांकि यही वो लोग हैं जो अक्सरियत में दूसरों की हेल्प पे डिपेंड होते हैं with increasing age, लेकिन फिर उनकी भी ईगो उनको मदद मांगने में मुश्किल कर देती है. Loneliness, जिसे तन्हाई कहा जाता है, is a feeling that is expressed in the fact that those affected feel alone, isolated, helpless and not understood. And it sounds like a contradiction कि हमारी इस डिजिटल कनेक्टेड दुनिया में अभी तक लोग मौजूद हैं जो लोनलीनेस का शिकार हैं या थे, regardless of the fact कि ये फीलिंग या बीमारी ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से तेजी से बढ़ी है.
loneliness triggers the same feelings in those affected, but the cause can be different for everyone. ये हमें मूवी में भी दिखाया जाता है। हर मेन कैरेक्टर में एक तरह की तन्हाई मौजूद है, बस रीजंस अलग हैं। Sergeant seems to be lonely because he lives alone, has no family, wife or children, and also seems to have no friends. ज्यादातर सीन्स में वो अकेला ही नजर आता है। किसी से बातें किए बगैर वो काम पे जाता है, अकेले ही अपने काम के टास्क फुलफिल करता है, एंड इवन लंच या डिनर अकेले ही करता है। मे बी वो महीने में एक बार अपनी वाइफ की ग्रेव पे फूल रखने जाता है, लेकिन इसके बजाय he doesn't seem to engage in any activities. ये हमें जब पता चलता है जब शेख उसको इसके बारे में पूछता है। जाता हूँ मैं टीवी देखता हूँ। But one becomes especially aware of his loneliness when we see him on the terrace watching another family having dinner and feeling caught when the little girl intentionally closes the windows. दूसरी तरफ इला की लोनलीनेस ऐसे जाहिर की जाती है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड के अटेंशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी रहती है, but her husband doesn't give her any attention because he is apparently having an affair. उसके पास कोई नहीं है जिसे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसकी माँ अपने ख्यालों में ही गुमसुम है, और ऐसा भी लगता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। Her only support is her neighbor, with whom she talks from time to time, but there is no question of a deeper conversation. इसलिए वो भी अपने से पूछती है कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। और शेख में भी एक तरह की लोनलीनेस महसूस होती है। बेशक उसका कैरेक्टर ओपन है या वो आसानी से नए कॉन्टेक्ट्स बना लेता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है because he has no family, grew up alone, had to give himself a name, and has no one really to whom he can make this loneliness understandable until he finds Sergeant. उसकी एक वाइफ तो है जिसे वो प्यार भी करता है, लेकिन वो एक बड़ी फैमिली में पली बड़ी है और इस वजह से शायद उसकी लोनलीनेस को नहीं समझ पाती। And although Lunchbox takes up many topics, the slow narrative style of the film gives the topic of loneliness a special focus. इस तरह से व्यूअर को दिखाया जाता है कि लोनलीनेस के मल्टीपल फेसेस की वजह से हमें अक्सर अंदाजा नहीं होता कि बहुत से लोग लोनलीनेस का शिकार हैं, और इनमें ऐसे भी मिलेंगे जो हमें हंसते हंसते लोगों के बीच मिलते हैं, लेकिन अंदर से वो भी अपने आप को खाली महसूस करते हैं या उस इंसान की तलाश में होते हैं जो उनकी बातों, उनके ख्यालों को समझे। लेकिन फिर भी हमें ये कहना पड़ेगा, आसान नहीं होता लोनलीनेस से छुटकारा पाना, क्योंकि ये हर एक के लिए अलग है, एंड द ओनली पर्सन जो हमारी मदद कर सकता है वो हम खुद हैं। मगर यहाँ भी हमें मूवी दिखाती है that even if it's uncomfortable, it's still possible, और कभी कभी तो एक ही सिचुएशन काफी होती है ताकि हमें लोनलीनेस छोड़ जाए। In the case of Ila, ये सिचुएशन तब आती है when her father dies, और उसे अपनी माँ को देखते हुए ये एहसास होता है कि वो अपनी आने वाली जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहती, alone and without any help. साजन के लिए ये सिचुएशन तब आती है जब उसका इला के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, या जब वो उन खेलते हुए बच्चों का बॉल वापस करता है और ऐसे उनके साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेता है। और आखिर में शेख भी अपनी तन्हाई से छुटकारा पा ही लेता है जब वो साजन से पूछता है कि वो उसकी शादी में आए एज अ फैमिली मेंबर, और इस तरह से उसको भी एक दोस्त मिल पाता है जो उसको समझता है। We are not always on the sunny side of life. Sometimes we just go through things that demand a lot of strength from us, where some others get in despair. इन others में साजन, इला और इला की माँ भी शामिल हैं, जो फिर अपने आप से पूछने भी लग जाते हैं कि उनकी जिंदगी का क्या मकसद है या दूसरों पर क्या असर डालती है। और हमें पता है कि हम इस एपिसोड में इस सोच के बारे में बात कर चुके हैं, but we also know that the feeling of living in an influential life comes up very often in the movie. Life is a set of events. जो भी हमारी जिंदगी में होता है एक मकसद के लिए होता है, और ये बात हर इंसान और उसके रिश्तों पर लागू होती है। When we come into contact with others, we observe and unconsciously acquire things that we like, regardless of whether they are good or bad for us. And above all, such influences are prevalent in parent-child relationships, because a child is still very needy at a young age and learns most by observing its parents. मूवी में दो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, शेख और इला की बेटी, जिनकी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों से मुतासिर होती है, और ये दूसरों के देखे बगैर। इला की बेटी अभी बहुत छोटी है, उसके कोई बहन भाई नहीं है, और वो अपनी माँ के साथ घर में बहुत वक्त गुजारती है। जिंदगी कैसे गुजारनी है वो अपनी माँ से सीखती है, और शायद ये भी सीखती है that life is not good and has no meaning because that's her mother Ila's opinion, who on her side probably copied this negative, helpless worldview from her mother.
But Ila is not aware of the fact that she has an influence, and that kind of a negative influence on her daughter. On the other side has the life of Sajan, a good influence on Sheikh, क्योंकि शेख को साजन में एक ईमानदार इंसान नजर आता है जो अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहा है, हालांकि साजन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमें मूवी में भी नजर आता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शेख साजन के वक्त को रिस्पेक्ट नहीं देता, बल्कि दूसरों के साथ बातों में मसरूफ रहता है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे सब्जी काट रहा होता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में भी पड़ जाता है। We can see a lot of these things in the movie, and though Sargent thinks that his life has no influence on others or little meaning, confesses Sheikh the opposite to him. क्योंकि साजन के इन्फ्लुएंस की वजह से ही शेख ने ट्रेन टिकट खरीदना शुरू किया और इस तरह से ही एक ईमानदार शख्स की तरफ पहला कदम उठाया। हमारी जिंदगी का दूसरों पर असर, चाहे गुड और बैड, हर बार ऑब्वियस नहीं होता। A lot of times it happens unconsciously without anyone noticing the influence. और यही हमारे लिए एक सीखने की बात है कि हमारी जिंदगी हमेशा उस हर ह्यूमन बीइंग पर असर करती है जो हमसे मोहब्बत या हमारी तारीफ करते हैं। And that alone is reason enough that our life has a value. But this also means that we need to take care of ourselves, about what we present to the world about ourselves, since the influence on others can either be positive, as with Sajan and Sheikh, or negative, as with Ila and her daughter. हम एंड तक पहुंच चुके हैं। हमारे ख्याल से बहुत से लोगों को ये मूवी बोरिंग लगती होगी because of its slow narrative style, symbolized again by the way the main actors correspond with each other, or by the unusual, not that often seen kind of romance. लेकिन क्या यही वजह नहीं है कि हम इतनी आसानी से मूवी में घुस जाते हैं या कई सीन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? इसलिए let's do a quick recap of what we have learned. Number 1, sometimes the wrong path leads us to the right place. Therefore, we should also trust the unplanned, unexpected. Number 2, others will always have an opinion. If we listen too much to it, we will destroy a lot of ourselves. Number 3, we are often in our own way. If we cannot cope with problems alone, then we should look for help. Number 4, many people suffer from loneliness, even those we often find love in. And number 5, every life has an impact on other people, and just because of that, every life has a meaning. And with this in mind, we end this episode in the hope that you enjoyed it. We hope you liked our video. Please like and subscribe to our channel and share it with your friends and family. Feel free to comment. See you next time.